बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you all? Hope you people are enjoying good health. I'm also very fine. And we are going to revise our unit which we had done previous week. थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे और जो चीज़ें हमें समझ नहीं आएंगी वो हम क्लास में बात कर लेंगे उनके ऊपर. So we are going to revise present continuous tense, adjectives and conjunctions. Present continuous tense के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं. कंटिन्यूस का मतलब होता है जो काम जारी रह रहा है, मुसलसल हो रहा है. अब वी आर जंपिंग, यू के साथ भी आर आएगा. यू आर जंपिंग, यू आर ईटिंग, यू आर रनिंग, दे आर रनिंग, दे आर ईटिंग, दे आर जंपिंग, वी आर ईटिंग. ठीक है, आर जो है इन तीन चीज़ों के साथ आर आएगा. इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब हैं इज़, एम और आर. एम जो है वो हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, इसके अलावा एम किसी और के साथ यूज़ नहीं करते. वी हैड डन दिस प्रैक्टिस अर्लियर इन द क्लास, so we are just summarizing these things. He is walking, she is playing, it is walking, he is playing, he is running, then she is walking, she is playing, she is running, then it is walking, it is playing, it is running. अब हमें समझ में आ गया कि इट जो है वो सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज़ होना है, जैसे ही, शी, इट. और नेम अगर कोई आ जाएगा तो उसके साथ भी हमने इज़ यूज़ कर लेना है. और आर जो है वो हमने प्लूरल के साथ यूज़ करना है, आई, वी, दे. और आई के सॉरी यू, दे और वी के साथ हमने आर यूज़ करना है. और एम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है. I am eating, I am jumping, I am running. Fine. अभी आपको समझ में आ गया. अब थोड़ी सी इसकी और हम क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे. और जिन लोगों ने ये काम नहीं किया हुआ, द पीपल हु वर इन द ड्रिल, वो आप इस काम को जल्दी से फिनिश कर लें. फाइन. After that, an adjective is a word that describes a noun or pronoun. For example, the green grass looks pretty. The green in this sentence, green is an adjective. अब इसकी थोड़ी सी और एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं. ही इज़ अ फास्ट ड्राइवर. अब यहाँ पर जो फास्ट है वो क्या है? यहाँ पर जो फास्ट है वो क्या है? एडजेक्टिव. आई मेट homeless person in NY. NY stands for New York. Homeless is over here is a homeless is here an adjective. उसके बाद official shared some important news. Look, that phone is mine. अब यहाँ पर क्या है? Adjective that. You can't look without permission. And ancient precious coins are exhibited in this museum. इसमें precious है. फिर next में what a delicious taste of this apple. Delicious is an adjective. Sorry, मेरे जो circles हैं वो overlap कर रहे हैं. I'm going to erase them. I have got a little money. A little over here is an adjective. It is enough to buy this book. My dog has blue eyes and a fluffy skin. इसमें आपने खुद देखना है, fluffy और blue दो हो सकते हैं. A large car cannot pass through the narrow road. Large is an adjective over here. I'm going to erase it because we can't see the whole word. Fine. Hopefully you people have understood what I have said to you. See, we have the next thing, conjunctions. Okay, a conjunction is a joiner
a word that connects parts of the sentence. We had discussed is for many times a word connecting words, clauses और sentences. अब उसकी जो एग्जांपल हैं वो हम देख लेते हैं. There are so many kinds of conjunctions because so, then, and, or, but. These are all examples of conjunction. And if you want to look at the more examples, you people can see in the next slide. And at the end, you have to finish your exercises. If they are not completed, अगर वो complete नहीं है तो उसको करने की कोशिश करें, और जिनको समझ नहीं आ रहा, I'll tell them in the class. Till my next meeting, Allah Hafiz from my side. We will meet tomorrow, inshallah.